Assalamualaikum. Welcome to the lectures of entrepreneurship. So here in this lecture, we will first of all try to understand the basic concept of entrepreneurship. So the lecture one is going to be understanding entrepreneurship. So let's see what are going to be the objectives for us of this chapter. The learning objectives will be define entrepreneurship, explain the role of entrepreneurship, distinguish entrepreneurial ventures from small businesses, describe the evolution of entrepreneurship, and identify today's broad trends in the field of Asia. So, in this chapter, at the end of this chapter, we will be able to understand what is an entrepreneurship, what is the role of entrepreneurship in the development of the society and in the development of the life of an entrepreneur, and we will learn to distinguish between entrepreneurial ventures and the conventional businesses, and then we will study that how this concept has evolved, and then we will identify today's broad trends in the field of Asia. So first of all, in order to accomplish the goal, objective number one of this chapter, which is definition of entrepreneurship, we will first understand that who an entrepreneur is, or who that person is who defines entrepreneurship, or who actually accomplishes entrepreneurship. So first of all, let's see who an entrepreneur is. So entrepreneur is the one or a person who organizes the business, manages and assumes risk of a business and enterprise. So entrepreneur is a person who not only organizes and manages the business but also takes the risk associated with the startup of that business as well. So let's see what is the nature of entrepreneurship. Actually, entrepreneurship is a mindset. Entrepreneurship is the state of mind. And when a person's state of mind gets towards opportunity focused, it gets innovative, and it gets oriented towards growth, then the mindset of an entrepreneur is mindset of the entrepreneur is settled towards a direction towards uniqueness, or it is direction towards the entrepreneurial activities, and it has been direction towards entrepreneurship. So here is a little task for you, is that can you give me some additional characteristics or attributes of an entrepreneur and an entrepreneurship in the comment section. So this is the little activity which you have to. So what is the promise of entrepreneurship? Which means that what an entrepreneurship claims, that what an entrepreneurship says, that once you will embark on the project of entrepreneurship, what are its claims or what are its promises. So first one is an integrated input and output model, which means that if you provide a uniqueness uniqueness as an input in the process, or if you provide skills and input onto the process, that the output will be a model which will be based on newness, which will be based on innovation and realization. Next is career assessment approach, which means that if you will move towards entrepreneurship, you will that if you carry on with your own skills and the concepts, and if you are motivated enough to develop your own, or if you are motivated enough to carry your own dreams, that there is going to be a career which you will possess, and that career is going to be based on entrepreneurship. The new venture creation process, what will be the new venture creation process? The new venture creation process will be that you will be the person, or you will be the entity who is going to create a new business which will be based on skills, ideas, innovation, and then from innovation you are going to step towards realization. Let's see what is the process of the entrepreneurship. जो भी entrepreneurship के ideas होते हैं, जब भी एक person motivated होता है अपने entrepreneurial process को start करने के लिए, अपनी life में entrepreneurship को जगह देने के लिए, तो वो
जो सारी इन्वायरमेंट होती है, वो जो सोसाइटी होती है, वो आपकी सराउंडिंग्स में ही एग्जिस्ट कर रही होती है। और जो है अपॉर्चुनिटी आप इन्वायरमेंट से ही असेस कर रहे हो। तो एंटरप्रेन्योर के पास जो है उसके जो न्यू वेंचर होता है उसकी सराउंडिंग्स में मार्केट्स मौजूद हैं, कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, लीडर्स हैं, रियल एस्टेट मौजूद है, लॉज हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ असेसमेंट है, लेबर है, वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल के आपके पास जो है वो क्या करते हैं, आप इन्हीं चीज़ों से अपने लिए कोई ना कोई एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं या अपने लिए उस एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करते हैं। न्यू वेंचर में आपको किन चीज़ों का एंटरप्रेन्योर को किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एंट्री स्ट्रेटेजी का, कि हाउ आर यू गोइंग, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटेजी टू एंटर इनटू द मार्केट, लाइक हाउ आर यू गोइंग टू आउटग्रो योर कंपेटिटर्स, स्टार्टअप रिसोर्सेज, आपके पास कितनी सीड मनी मौजूद है, कितने स्टार्टअप रिसोर्सेज मौजूद हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कौन से होंगे अगर आप एक न्यू वेंचर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो कौन से रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ, और उसके इन रिटर्न आपको उन रिस्क को बियर करने के बाद कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देन इज फाउंडिंग टीम, आपकी पार्टनरिंग टीम कौन है, हु आर योर पार्टनर्स, देन लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मॉडल। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट में आती हैं। द प्रोसेस वुड बी to identify the opportunity. आप इस environment में और न्यू वेंचर में आपने क्या करना होता है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। You acquire the resources, you produce a product or service, then you market your product or service. Then what happens is that you design and build a company and respond to the environment. So this is going to be a process of how you carry out the process of entrepreneurship, or how you carry out the entrepreneurial process. Entrepreneurship and technological change. This is very important, that how entrepreneurship and how new skills and new trends uh, have now switch towards the technological change, and how the on new ideas in entrepreneurship and technological change are interrelated towards each other. So entrepreneur, emerging customer segment, new customer needs, unsatisfied existing needs, new methods of manufacturing and distribution. So कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिनसे एक एंटरप्रेन्योर इम्प्रेस होके, या एक एंटरप्रेन्योर कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की बिना पे एक एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है, उसके माइंड में मोटिवेटेड होता है अपनी जो है चीज़ों को, एक न्यू आइडियाज़ को जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोटिवेट होता है। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, दैट इज इमर्जिंग कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट जो से भी है, जो ऐसे कस्टमर सेगमेंट को एक एंटरप्रेन्योर टारगेट करता है जो कि ऑलरेडी केटर्ड नहीं होता, विच इज इमर्जिंग कस्टमर सेगमेंट। देन न्यू कस्टमर नीड्स, देखें जैसे जैसे इन सोसाइटी चेंज होती है, इन्वायरमेंट चेंज होती है, जिस तरीके से रेवोल्यूशनाइज होती जाती हैं चीज़ें, इसी तरह कस्टमर की जो नीड्स हैं और जो वांट्स हैं वो भी चेंज होती जाती हैं। तो न्यू कस्टमर नीड्स के साथ जो है वो आपकी एंटरप्रेन्योर जो है वो स्विच करता है, और न्यू कस्टमर नीड्स के साथ जो है वो एंटरप्रेन्योर चलता है। एंटरप्रेन्योर अनसेटिस्फाइड एग्जिस्टिंग नीड्स, एंटरप्रेन्योर उन नीड्स को कैटर करता है जो कि स्टिल अनकेटर्ड होती हैं, अनसेटिस्फाइड होती हैं, and new methods of or what entrepreneur does is he applies new methods and new methods of manufacturing and distribution. All of these, all of these emerging customer segments, new customer needs, unsatisfied existing needs, and new methods of manufacturing, all such components or all such points rise due to technological change. टेक्नोलॉजिकल चेंज विच मीन सोसाइटल चेंज या सोसाइटल शिफ्ट्स की वजह से ये सारे जो आपके कस्टमर की नीड्स हैं ये चेंज होती हैं, अनसेटिस्फाइड नीड्स चेंज होती रहती हैं, तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से होती है। हाई प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और
जब टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है एंटरप्रेन्योर भी क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स भी उस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को देखते हुए न्यू सेगमेंट्स को रियलाइज करते हैं, न्यू सेगमेंट्स की तरफ जाते हैं, उन न्यू सेगमेंट्स को कैटर करते हैं. देन व्हाट हैपेंस इज दैट द सोसाइटी थ्रू आउट the society as a whole move towards the higher productivity. These are very important things. Like what are the outcomes or what are the fruits that we get from entrepreneurial activity? This first one is economic growth. सबसे पहला जो fruit है entrepreneurship का वो है economic growth, which means कि जो आपकी country है, जो आपकी society है, that grows economically. आपकी country, आपकी society, entrepreneur का अपने जो उसका ग्राफ है, इनकम का ग्राफ, वो हर चीज जो है उसके अंदर एक ग्रोथ का पैटर्न शुरू होता है, which means in short economic growth. Next is new industry formation, which means कि you are going to form new industry formation होती है इसके अंदर. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं उनसे हट के जो है आपके पास इंडस्ट्रीज लगती हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. लेकिन जब न्यू इंडस्ट्री फॉर्म होती है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, तो जॉब्स की बहुत क्रिएट होती हैं. तो ये सारी चीज़ें बाय वन वे और अदर वे लाइफ स्टैंडर्ड की इम्प्रूवमेंट में, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में बाय वन वे और अदर वे ये सब कुछ जो है लिंक. Let's see new industry formation. New industries are born when technological change produces a new opportunities that an enterprising entrepreneur seizes. जो new industries कब आती हैं, new industries कब born होती हैं, जब टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता है और उस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज जो है एंटरप्रेन्योर्स और मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स उन अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करके यूज करने की कोशिश करते हैं. Disruptive or metamorphic technologies that destroy previous technology and create new industry and display different pattern of behavior. सेकेंडली न्यू इंडस्ट्री कब फॉर्म होती है, न्यू इंडस्ट्री कब फॉर्म होती है जब एक इस तरह की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि पिछली तमाम टेक्नोलॉजीज को जो है वो आउटमेंट कर देती है, पिछली तमाम टेक्नोलॉजीज को क्या करती है उनको न्यू टेक्नोलॉजी की आने की वजह से पिछली तमाम टेक्नोलॉजीज को बढ़ हो जाती है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज new industries and new technologies like they come into play and they display a different pattern. Once new technologies launch, लेकिन सिर्फ जब आपके पास एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे, दूसरे टाइप के हैंडसेट्स थे, तो इंडस्ट्री की जो थी वो डिफरेंट थी, लोगों के बिहेवियर डिफरेंट था, पैटर्न डिफरेंट था. जैसे ही एंड्रॉइड पे शिफ्ट आया, विंडोज पे शिफ्ट आया, तो जो कंज्यूमर है उनकी प्रायोरिटीज भी चेंज होगी. कंज्यूमर जो है उनकी तमाम की तमाम जो थी बिहेवियर था, पैटर्न्स थे बिहेवियर, वो तमाम के तमाम चेंज होंगे. The pattern of growth, shakeout, stabilization and decline of industry can be interrupted at any time by the entry of another disruptive technology. So let's see industry life cycle कि किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल क्या होती है. फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन फेज, कंसोलिडेशन और शेकआउट फेज, मैच्योर फेज एंड डिक्लाइन. देखें कि क्या है कि फॉर्मेशन फेज में जो है वो ग्रोथ जारी है, फिर कंसोलिडेशन फेज है, और फिर उसी तरीके से मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन फेज है. और ये जो है ये नंबर ऑफ फॉर्म है, विच मीन्स फॉर्मेशन फेज में नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा होते हैं, मैच्योरिटी पे नंबर ऑफ फॉर्म्स कम होते हैं, फिर डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह इंडस्ट्री की जो जीडीपी है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, मैच्योर करती है, डिक्लाइन करती है. विच मीन्स कि इंडस्ट्री की जो लाइफ साइकिल है, लाइक जितना ग्रोथ की तरफ ट्रेंड जाता है उतना ही आपकी सोसाइटी की इकोनॉमी के लिए बेटर होता है, और जब डिक्लाइन की तरफ कोई भी इंडस्ट्री आ रही होती है तो वो सोसाइटी के लिए इतने बेनिफिशियल नहीं होता. So the nature of entrepreneurial startups, the entrepreneurial venture brings something
a marketplace, and three primary characteristics are innovative, value creating, and growth oriented. Entrepreneurial startups का क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो entrepreneurial startups होते हैं, they have something related to creativity with them in them. उनके अंदर कुछ ना कुछ creativity का concept जो है वो मौजूद होता है. Something new is there, and there is something innovative. There is something which creates value for the customers, and such entrepreneurial ventures or new entrepreneurial startups are growth oriented, and or they are oriented towards growth. So this is all for this lecture right now, and we will cover the rest of the chapter in